Assalamu alaikum viewers, welcome to our channel NFI TANGI। पाइथन प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में पिछले हमने कुछ टॉपिक कवर्स की थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट अ स्क्रिप्ट टू चेक वेदर अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज even or odd। We have to write a Python program to check either the given number is odd or even। For that purpose, we have to firstly declare a variable, namely num equal to float into input, enter a number। ये क्या करेगा, यूज़र से एक नंबर क्या करेगा, लेगा। यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल 28। अब हम चेक करेंगे कि इट इज़ डिविजिबल बाई 2 और नॉट। So we have to write a condition if num modulus 2 equal to 0। ठीक है जी। अगर e divisible by 2 है then simply print a statement number। num में क्या है, हमारे पास जो वेरिएबल है जिसमें हमारा गिवन नंबर स्टोर है। The given number is divisible or even। The given number is even because it is divisible by 2, else otherwise print the given number is odd। तो अगर ये कंडीशन ठीक है तो हमारे पास क्या कर लो, odd। So 28 is even। अब फॉर एग्जांपल मैं वही प्रोग्राम दोबारा रन कर देता हूँ। यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, लेट से 35 है। अब ये कंडीशन चेक करेगा, इफ नंबर डिविजिबल बाई 2 देन सिंपली प्रिंट आउट इट इज़ even नंबर, एल्स अदरवाइज प्रिंट आउट दैट द गिवन नंबर इज नॉट divisible by 2, it means that it is odd number। So 35 is not divisible by 2, then definitely it will display 35 is odd। इस वाला कंडीशन रन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 8, राइट अ स्क्रिप्ट टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। हम क्या चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 7। सो सिंपली मैं वही पुराना कोड जो है मॉडिफाई करता हूँ। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, फिर यूज़र एक नंबर एंटर करेगा। अब हम चेक करेंगे इफ अ नंबर मॉडुलस 7 equal 0, it means that it is divisible by 7। then simply print out number is divisible by 7। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है तो e डिविजिबल बाय 7 है। एंड एल्स राइट द एल्स स्टेटमेंट। अगर ई कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास नंबर 34 है एंड 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है जी। तो ई एल्स का जो है लूप एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास ई स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क था टू चेक आउट डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 7। ओके व्यूअर्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक।